साफ सफाई करने वाली है क्या? सब सब एक ही है उसके। चलेगा क्या वो? हाँ, बुला उसको ऑफिस। हर चीज में चोरी। നമ്മളെ ഏത് കാറിലാ പോണ്ടേ? विनोवा। प्लेट्स ओवरलैप द सबडक्शन जोन क्या है? एक प्लेट नीचे जाती है, एक प्लेट ऐसे रहती है, जो हेवी वाली प्लेट रहती है हाँ। वो नीचे जाती है, इसको बोलते हैं सबडक्शन जोन। ये वाला एक क्वेश्चन को डिस्कस करने 40 मिनट जा रहा है सिर्फ एक, और जो जो वर्ड्स के अंदर आते हैं ना यूपीएससी में, वो तुम्हारे ज्योग्राफी में है। इसी से ट्रेंच बनता है। क्या बनता? ट्रेंच। तो मरियाना ट्रेंच सबसे डीपेस्ट है, मालूम है क्या? पानी का डेप्थ यूज करने के लिए क्या वापरते हो यूनिट? ये नहीं है तो मैं उठ के जा रहा, देखो मालूम है? क्या पढ़ती तू? फिर तू देखो गुस्सा आएगा, फिर देखो बोलेगी मैं आई रिजाइन, ऐसा बोलेगी। मेरे को सोनार टेक्निक पता है जिससे डेप्थ मेजर करते हैं। फेदम लिख, फेदम नाम सुना था? FATHM, बट तो सुना है। FATHOM, फेदम। कितने लोग मालूम है? पानी का डेप्थ मेजर करते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट है ना उसका नाम है फेदोमीटर। मैं को लगता हूँ मैं यूपीएससी जाना पास हो जाता एज के लास्ट यूपीएससी लिखने में, और एक जन्म लेना पड़ेगा। मैग्मा क्या? इंडिया में किधर वॉल्केनिक फुट था? वॉल्कन इंडिया में अंडमान निकोबार में पता है ना? बैरन आइलैंड। अंडमान निकोबार तो मैं गया था, मेरे को बैरन आइलैंड नहीं दिखा। एक्टिव वोल्केनो है। ट्रोम्बोली, इटली वगैरह उस वगैरह। अभी मैंने जो डिस्कस किया ना 150 वर्ड में लिखना पड़ता, तो 10 मार्क का क्वेश्चन है। डिस्कस द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कम पैसिफिक जोन, ये क्वेश्चन है, उनको लिखना पड़ता है। सर्कम पैसिफिक जोन को क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर। उसके ऊपर उनको 10 मार्क का लिखना पड़ता ना। हाँ, तो अलग अलग बच्चे अलग अलग आंसर लिखेंगे ना। हाँ। फिर उसको मार्क्स कैसे देते? सब उसका कुछ आइडियल आंसर नहीं रहता है फिक्स, एग्जामिनर देता है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स। एग्जाम को पैसे खिला दो चलता ना इंडिया में। यूपीएससी कितने लोग पास हो रहे हैं आजकल? हो गया ना अभी केस पूजा पूजा को लाइव है अपन, लाइव है क्या अपन? लाइव चल रहा है क्या? नहीं पता, अभी ये लगाया नहीं अब तक, इस पे लगाया सिर्फ लाइव। लाइव है क्या? हाँ, इधर साफ सफाई करो बोला तो करा नहीं। लाइव है क्या? क्लास नहीं भी चल रहा, रात में 11 बजे पर क्लास चलना। लाइव उठा जरा, झाड़ू आना। भाई काम वाली भाई को भी कितने नखरे थे। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी प्रोसेस ऑफ डी सर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेट बाउंड्रीज, गिव एग्जांपल। एग्जांपल का वर्ब क्या है? एग्जाम्पलीफाई। उठो ना जरा वहां से, जरा उसको हटाओ, बेंचेस हटाओ, बेंचेस हटाओ, जरा देखो जरा उसको। ओके, आवाज ना करो तुम्हें, लेक्चर कर रहे। डिसर्टिफिकेशन मतलब क्या? डेजर्टिफिकेशन मतलब क्या? जहाँ पर फॉर्म होता है। ए डेजर्ट क्यों बनता? पहला पॉइंट, डेजर्ट बनने की वजह डिफॉरेस्टेशन। नहीं ना, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट कट कर रहे ना अपन। कितने लोग मालूम है गोल्फ क्लब बना तो भी डेजर्ट बनता? गोल्फ बनाता ना गोल्फ क्लब, तो भी आप लोग ग्रीन ग्रीन लगता ना, लेकिन डेजर्टिफिकेशन होता। और लाइफ स्टॉक का ओवर ग्रेजिंग, फॉरेस्ट ऑफिसर्स है ना, ये एनिमल्स को, कैटल्स को फॉरेस्ट पे नहीं छोड़ते। क्यों? वो क्या करता, फॉरेस्ट में छोड़े ना, वो लोग घास खाते ना, तो घास खाते तो बारिश का पानी आता तो पूरा मिनरल को लेके जाते। तो लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग से भी फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन होती।
अरे मालूम है क्या ये बात? वर्ल्ड के वेस्टर्न साइड में, मतलब हर कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में ही डेजर्ट देखने को मिलते हैं, ऐसा रीजन पता हाँ, उसका क्यों क्या? ऐसा? उसके पीछे रीजन ऑस्ट्रेलिया देखो, ऑस्ट्रेलिया, तुम ऑस्ट्रेलिया को देखो, आधा ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट है, तो ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट पार्ट जो है वो डेजर्ट है, चाइना थोड़ी डेजर्ट है। कुछ भी मत बोल कौशिक। नहीं नहीं है, नहीं है तो। मंगोलिया में। मंगोलिया कोल्ड डेजर्ट, चाइना किधर है कोल्ड डेजर्ट? वो भी डेजर्ट मंगोलिया में। गोबी डेजर्ट मंगोलिया में है, चाइना में नहीं आया। कोल्ड करंट, वार्म करंट। ये कोल्ड कौन साफ करंट जो करता रहता है है, बाथरूम? कौन करता है? जरा भाभी ला विचारा। अफ्रीका का कालारी डेजर्ट, वो साउथ, ये अपना वेस्ट में है। नहीं, उसका रीजन क्या है? सब वेस्ट में क्यों आता है डेजर्ट? कोल्ड करंट बहता है वहां से, ठंडे रहते किसी हैं। कोल्ड करंट का नाम मालूम है? बहुत फेमस है ज्योग्राफी में, इंडिया में, लैब्राडोर करंट सुना ना? कोल्ड है ना? हाँ, तो पूरा कोल्ड करंट्स का लिस्ट बनाओ, वार्म करंट्स का लिस्ट बनाओ, कोल्ड एक करंट क्वेश्चन कौन उस पे से आता है? है। वार्म करंट। हाँ। और कोल्ड करंट और वार्म करंट जब मीट होते हैं ना, वहां पे एक घास बनता है, फॉगी कंडीशन होती है वहां पर, वो घास के लिचेंस क्या बनते हैं? लेकिन वो लिचेंस की वजह से लाइव आया, वो लिचेंस की वजह से ना वहां पे फिश मिलता, प्लैंकटॉन्स बोलते हैं, प्लैंकटॉन्स। क्या बोलते हैं उसको? लिखो, वर्ड का नाम लिखो, प्लैंकटॉन्स। वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे रहता है, तो वहां से मच्छी बहुत मिलती है। पॉपलैंड अच्छा है अर्जेंटीना। मेरा ज्योग्राफी, 25 साल ज्योग्राफी पढ़ेला मैंने, कितने? 25 साल। किसको बोलते हैं? अनिस क्लास में और किधर पढ़े? यहाँ पर फॉगी कंडीशन डेवलप होती है, कोल्ड करंट और वार्म करंट दोनों यहाँ पर मिक्स होते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा फिशिंग ग्राउंड होता है यहाँ पर। ग्रीन हाउस गैस एमिशन से भी होता डेजर्टिफिकेशन। कैमरा वैमरा लाएगा तुम? कैमरा लेके जाने का उधर, एक तो वीडियो निकालना मेरा। अनिस कुट्टी ऑनलाइन पढ़ा रहा വണ്ടിയിൽ സ്ഥലം പിന്നെ എടുക്കട്ടെ ഞാൻ മുമ്പിൽ ഇരിക്കും, നിക്കാൽ ജയിച്ചാൽ സാധനം പിന്നിൽ അണക്ക് ഇരിക്കേണ്ടി വരും, സാധനം ഇരിക്കേണ്ടി വരും, പിന്നെ ഒരാളും കൂടി ഇരിക്കേണ്ടി വരും. ഇവിടെ മൂന്നാൾ ഇരിക്കാൻ പറ്റും. ആ ബാക്കിലേക്ക് രണ്ടാൾ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. वार्म करंट से बारिश आती है ना, कोल्ड करंट से बारिश आएगी क्या? वार्म होगा कंडीशन तभी इवेपोरेशन तूने होगा। इसका आंसर नहीं बोला, ये इसका हमेशा वेस्ट में क्यों डेजर्ट रहता है? ये सुनो, मैडम क्या बता रही, मैडम का वीडियो बना दो। हाँ जी मैडम, मतलब सर पता नहीं कुछ नहीं कैसे चलेंगे। वार्म करंट जो रहता है उसकी वजह से इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा तो रेनफॉल आएगा। लेकिन कोल्ड करंट में क्या रहता है? इवेपोरेशन होगा, प्रेशर हाई रहता है, कोल्ड करंट मतलब प्रेशर हाई होगा, हाई प्रेशर होगा तो रेनफॉल नहीं होगा। तो कोल्ड करंट जहां पर रहता है वहां पर बारिश नहीं होगी, तो वहां पर क्या फॉर्म होते हैं? डेजर्ट फॉर्म होता है। हर कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में क्या है? डेजर्ट है। बताओ ना कौन कौन से एग्जाम्पल, कॉन्टिनेंट? अफ्रीका, अफ्रीका का देखो, कालाहारी इंडिया का डेजर्ट। देखो, इंडिया का वेस्ट साइड पे कौन है? राजस्थान है। ऑस्ट्रेलिया का देखो, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्या है? डेजर्ट है। और किधर है? हाँ, तो वेस्ट में नॉर्मली क्या आता? इंडिया डेजर्ट इसमें एक्सेप्शन है। इंडिया का जो डेजर्ट बना है वेस्ट साइड में, है। वो कोल्ड करंट की वजह से नहीं बना है, वो अरावली हिल्स की वजह से बना है। किसकी वजह से बना है? अरावली हिल्स। अभी यहाँ पर जो रहता है, क्लाउड्स रहते हैं, इसमें क्या रहता है? मॉइस्चर कैरी करते हैं क्लाउड्स, रेन बियरिंग क्लाउड्स है। अभी यहाँ पे है अरावली हिल्स है सपोज, तो ये रेन बियर करने वाले जो क्लाउड्स है, रेनफॉल कहाँ पर कर देते हैं? ईस्टर्न पार्ट में कर देते हैं, राजस्थान के। जो यहाँ पर क्लाउड जाते हैं वो सारे एम्प्टी होते हैं, पूरा बारिश यहाँ पर गिरा दिया, यहाँ पर एम्प्टी क्लाउड जा रहे हैं, तो यहाँ पर बारिश कहाँ से होगा? तो यहाँ पर डेजर्ट डेवलप होता है। ये वो और जो राजस्थान के ईस्ट साइड में रेन बारिश शैडो होती है। रीजन बोल सकते हैं इसको। हाँ, रेन शैडो रीजन। जैसा महाबलेश्वर में बहुत बारिश गिरता है, वाई में बारिश नहीं गिरता, इसलिए वाई में फिल्म शूटिंग होता है। समझा गया? उसी तरह से आसाम में ना चेरापुंजी और माहेश्वरम मालूम है? मौसम राम चेरा। मौसिम राम बोलते हैं उसको, एक्चुअली माहेश्वरम स्पेलिंग है उसका। वेटेस्ट प्लेस है वर्ल्ड। मालूम है क्या? और सेहेल रीजन अफ्रीका में किधर है? SAHEL पहली बार सुना। साहिल रीजन मतलब ग्रासलैंड से होता है। इंडिया का बेस अटलांटिक ओशन में भी है माल।
अरे इंडिया ने अपना बेस जमाया अटलांटिक ओशन में, मालूम है क्या नाम? उसको गंगोत्री बोलते, गंगोत्री। बह गया। हाँ बह गया वो। बह गया। क्यों? सबसे पहला था ये, हाँ ग्लेशियर मेल्ट होकर बह गया। अभी किधर है इंडिया का? अभी भारती है। भारतीय है और मैत्री है। मैत्री है। मैत्री तो R&D वाला ने किया, अपने सामने ऑफिस ने किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर्स, उन्होंने अंटार्कटिका में बेस बनाया। आर्कटिक में भी है। एक्टिव में भी बेस अपना, क्या नाम है? हिमाद्री। हिमाद्री। देखो पहली बार मालूम पड़ा, बोला ऐसा पहली बार हुआ है। अरे बोलो, पढ़ते रहेगा ना तो सुनते रहने का। ऑनलाइन ऑफलाइन ज्योग्राफी सुनते रहेगा ना तो अपने को आंसर आएगा। देखो एक बात बता दो, हिस्ट्री का कुछ गारंटी नहीं है। 4 सब्जेक्ट तुम्हारा अच्छे से होना चाहिए। सबसे पहला मैथ्स, उसके बाद इंग्लिश, तीसरा फिजिक्स, 25 क्वेश्चन आते हैं, और चौथा ज्योग्राफी। जो गारंटीड है, पढ़ा तो पास है। बाकी लोग का फ्लक्चुएशन है, बोल नहीं सकते क्या है। साइंस, करंट अफेयर और ज्योग्राफी। इससे पास हो जाते। मेडिटेरियन सी के बारे में कुछ बताना उनको। मेडिटेरियन सी, ये अपना यूरोप है ऊपर, और नीचे अफ्रीका, उनके बीच में आता है मेडिटेरियन सी। इटली वगैरह सुना होगा कंट्री के नाम। तो मेडिटेरियन सी कौन सा कैनाल है उधर जो ज्वाइन करना? कौन से 2 सी को ज्वाइन करता? रेड सी है यहाँ पर। रेड ब्लैक सी सी है। कहाँ से आया यार? मेडिटेरियन सी और रेड सी हो। रेड सी। और दूसरा पैसिफिक कैनाल, पैसिफिक ओशन में कौन सा कैनाल है? इस साइड में तो 2 कैनाल है ना फेमस। पनामा पनामा कैनाल, कैनाल किसको ज्वाइन करता देखो? अमेरिका, साउथ अमेरिका, 2 ओशन को कौन सा ज्वाइन करता हो? पैसिफिक और अटलांटिक। ये नहीं मालूम रहेगा तो डूब जाओ। बता जरा, बोल उसके बाद। किसने बनाया था पनामा कैनाल? उसका मशीन भी ऐसा जबरदस्त है उसका। ये है उसका शिप आता ना, उसको ऊपर लेके जाते, पानी में लेके जाते, फिर नीचे लेके आते। ये नॉर्थ अमेरिका है, यूट्यूब ये पे देखा साउथ करो ना अमेरिका जरा। है। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा नैरो पैच रहता है लैंड का, उसको बोलते हैं इस्तमस। स्ट्रेट इसका अपोजिट होता है, तो इसी को बोलते हैं पनामा। स्ट्रेट इसका ऑपोजिट है। दो लैंड को जोड़ने वाला 2 नैरो लैंड को जोड़ने वाला इस्टमन, इस्तमस, और 2 जो ओशन को वाटर जोड़ने बॉडी वाला। को जोड़ने वाला स्ट्रेट। वाल स्ट्रेट किधर है? वो इंडियन ओशन यहाँ पर ऐसे है। यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर श्रीलंका है, इसको उनके ज्वाइन बीच करने में। चलो, अब यहाँ पर राम सेतु बना रहे हैं, इसका नाम बताए धनुषकोडी बोलते गणेश कोडी उधर थोड़ी है, हैं। इंडिया में। हाँ, ये बॉर्डर पर केरला। तमिलनाडु। ऐसा क्यों रहता? नॉर्थ अमेरिका हमेशा पैसा वाला रहता, साउथ अमेरिका गरीब है। इंडिया मोबाइल वाला हाँ। नीचे फार्मिंग ज्यादा है तो, और ऊपर फार्मिंग ज्यादा है। हाँ, यहाँ पर ये वीट वीट का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है अमेरिका में। साउथ अमेरिका में रिसोर्सेस है, बट उसको एक्सप्लोर करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। किधर है सर? तुम्हारा 5 मिनट कभी होता ज नहीं यार। एक तो सादिया मैम भी नहीं आते, तुम भी नहीं आते। इसको ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। किसको? नॉर्थ अमेरिका, वीट का कल्टीवेशन ज्यादा होता है इसलिए। नॉर्थ अमेरिका से एक विंड बहती है जिसको स्नो ईटर बोलते हैं, क्या नाम है उसका? स्नो ईटर। देखो ना, गूगल करो स्नो ईटर क्या है। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया है इंडिया में। स्नो ईटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्नो होता है ठंडा, और उसको मेल्ट कौन कर सकता है? वार्म विंड, इसलिए इसको बोलते हैं चिनुक। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल हो, चिनूक लिखो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत बार एनडीए में क्वेश्चन है, सीडीएस में भी है। चिनूक पे। हाँ, इसको एक और क्या बोलते हैं नाम? स्नो ईटर, क्योंकि ये गर्म होता है और वो आइस को मेल्ट कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्नो ईटर। नॉर्थ अमेरिका का है। कहाँ पर आते हैं? रॉकीज माउंटेन। रॉकीज माउंटेन
अमेरिका। हिमालय से कौन कौन सा रिवर ओरिजिनेट होते हैं नीचे बता जा रहा रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हमारा जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है ना 33% उस पर डिपेंडेंट है और हमारा हाइड्रो पावर है ना वो 52% उस पर डिपेंडेंट है जो पानी आता है हिमालय से थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में और हाइड्रो पावर में क्या फर्क है कोल से बनता है। अभी कोयला इंडिया ऑस्ट्रेलिया से क्यों लेना चाहता है इंडिया में कोयला नहीं है क्या फिर कोयला क्यों ले रहा है ऑस्ट्रेलिया से हाँ अगर ग्लोबल वार्मिंग हो गया ना हिमालय का ग्लेशियर्स मेल्ट होगा हिंदू खुश हिमालय मतलब क्या वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इधर माउंटेन्स है बॉर्डर। समझो अगर वो ग्लेशियर्स मेल्ट हो गया ना तो पानी नीचे का तो अच्छा है ना पानी मिलेगा ना अपने को फ्लड आएगा, लैंडस्लाइड्स होंगे। अच्छा ये प्रॉब्लम हिंदू कुश माउंटेन से कौन सा इन्वेडर इंडिया में आया था, मतलब आने की कोशिश करा था, इंडिया तक आया था, बट इंडिया में नहीं आ पाया। अलेक्जेंडर। सिकंदर हम्म, पोरस कौन है पोरस ही इंडिया का, किधर रहता था इंडस रिवर के आसपास एक झेलम। क्वेश्चन इंडिया में आएगा क्यों मान गया इंडिया के अंदर अवार्ड मिलता है उसका उन्होंने मुगल्स को बहुत सताया उसका नाम है अहोम AHOM होम ट्राइब। ये पक्का क्वेश्चन लिख लो क्योंकि मैंने इंडिया के अंदर देखा इसका अवार्ड है इंडिया में कौन सा अवार्ड मिलता है देखो उसको अहोम ट्राइब पे इन्होंने मुगल्स को बहुत सताया पोरस ही भारत होता है पोरस पोरस नाम का किंग था। इंडिया में कितने पोर्ट है सोच रहे बहुत मेजर वाले स्टील प्लांट 12 नॉर्मली किधर था स्टील प्लांट ओसाका कोबे जो है ना जापान में जहाँ वैसे पर स्टील कोल प्लांट किधर है मिलते हैं। इंडिया में तो स्टील प्लांट जो सेटअप हो गया विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम को वाइजैक बोलते हैं क्या बोलते हैं विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश अभी ये अपना नायडू आया ना चंद्रबाबू नायडू तो चंद्रबाबू नायडू आने के बाद अमरावती में हरकत क्यों हो गया हैदराबाद तुम लोग को पूछ रहा जिप्रांडा ने तेलंगाना और आंध्रा है ना अभी आंध्रा में पहला ये था ना YSR था ना उसका बेटा था जगन रेड्डी तभी अमरावती में तो हलचल नहीं हुआ अभी हैदराबाद का कैपिटल क्या है तेलंगाना आंध्रा का कैपिटल क्या है अमरावती पहला डेवलप नहीं हुआ अभी क्यों डेवलप होगा वो बजट ज्यादा था सर बिल्कुल तो ना कोलैबोरेशन बनाना सर वो हाँ जब अभी चंद्रबाबू जीत गया है ना तो अमरावती का सब रियल एस्टेट का जगह भी बढ़ गया क्यों ऐसा स्टील प्लांट किस पे डिपेंड करता है कोल ना कोल। और इंडिया में कोल सबसे ज्यादा किधर मिलता है झारखंड, झारखंड छत्तीसगढ़। छोटा नागपुर प्लेटो किधर आता है झारखंड। स्टील प्लांट अभी नया बना है उत्तर प्रदेश में शाहरुख सर के गांव में गाजियाबाद उसका नाम क्या है? नाम बोलो इंडिया पास हो जाएंगे एनीवन हाँ अरे बोलो जल्दी बोलो ना गूगल करना पाप नहीं है मैं बोला गाजियाबाद में स्टील प्लांट का नाम क्या है उत्तर प्रदेश में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ बना है मैं दोबारा बोलता मैं यूपीएससी के बुक से पढ़ा रहा हूँ कैमरा ऑन करो कैमरा ऑन करें और मेरा वीडियो निकालो मैं जो बोल रहा हूँ ये कैमरा ऑन है इसका
उसका कैमरा ऑन है ना? हाँ। ये दोनों को मैं ये बता, यूट्यूब पे लाइव जा रहा, ये जो बुक है ना तुम्हारा, ये बुक का नाम है जनरल स्टडीज पेपर 1 to 4 किसका, यूपीएससी में एग्जाम। तो यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो पैराग्राफ वाइज पूछते हैं। उसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसी का कंटेंट किधर आ रहा है आजकल, सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ का। और सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ का जो गैट है, वो कहाँ पूछ रहे हैं आजकल, इंडिया में। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने में इसको रिलेट करो तो इजी पड़ता। बात सबके समझ में आया क्या? हाँ, तो जो क्वेश्चन उनके यूपीएससी में आए, उसी क्वेश्चन को अपने को क्या करना है, इंडिया के लिए पढ़ना है। तो पढ़ाई भी आसान होता है और इजीली हम लोग पास भी हो सकते हैं। तो रिलेट करो उसको। वो जियो पॉलिटिकल पूछते हैं, हमको उसमें से फाइन पॉइंट्स करके नोट्स बनाना है। और इंडिया पास करने के लिए 4 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, मैथ्स। उसके बाद क्योंकि 120 क्वेश्चन आता है, इंग्लिश 50 क्वेश्चन आते हैं। तीसरा फिजिक्स 25 क्वेश्चन आते हैं। चौथा ज्योग्राफी। ये पढ़ेगा तो ही इंडिया पास होगा। करेंगे सब? टाटा बीएसएल नहीं, उसका नाम है भूषण स्टील प्लांट। क्या नाम है उसका? भूषण। सर को तो ये लिंक कंटिन्यू है ना? हाँ, इसको फिर ये मत कर दो। तो 9:40 तक कंटिन्यू। तो पढ़ना नहीं, तो टाइम पे आता नहीं। तेरे पास, तेरे को दिया बुक, तेरे को उसमें से पढ़ा नहीं है। जो भी गैट पढ़ना चाहते हैं उसी में से पढ़ा, रोज देख क्या नहीं। सब तरफ लाइफ चलता। सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, वो बता दे, पूछ रहा है। क्या बोलना, क्या है, बोलना क्या चाहते हो? सिलेबस खत्म कर रहे हैं हम लोग। सिलेबस खत्म कर रहे हैं हम। अब बोल। नहीं नहीं सर, वो बोल रहे हैं यार, अब तुमको हाथ चलाना, सुबह से सबको हाथ चलाना है। मेरे को भी मारे सुबह में, ऊपर बेड पे सो रहा ना, आके मारे मेरे को लगती। ये लकड़ी बोलते सर, लकड़ा बोलते। पूरा भीग गया है। जैकेट जैकेट 20 किलोमीटर भीगते बारिश में गाड़ी चलाते। चलता हाँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन एनीबॉडी कनेक्टेड? यूट्यूब पे लाइव भी है क्या हम? ओके, सो I have a question right now. Shall we start with the new physics chapter or shall we do the question paper solving? Yes, new chapter. Sure. Bhuvan, what are you doing? अरे यही बंद कर दो, ठंड लग रही है। कर लेना है ले, कहाँ है remote? So today first our lecture is chemistry lecture. So what did Sadia ma'am do yesterday? का लेक्चर नहीं हुआ। नहीं हुआ। ये सर ने कंटिन्यू किया ना, 8:40 8:20 तक आज मैं वहां पर बुलाए। अच्छा, परीक्षा हिस्ट्री बाद में हमको छोड़ दिया। okay. फिर से टेस्ट। So we did till heavy water last lecture. Today let us do carbon. So what is carbon? Can anybody tell me? It's an element which is present in group 14 of periodic table, also known as group 4A. A यानी कि normal elements, B यानी कि transition elements. Please remember, in the old system, A was given to the ones which were on the left and right hand side of the periodic table,
And the central part of the periodic table were designated by Roman numeral followed by a B letter. A means it's a normal element. It occurs in free state. Carbon occurs in free. What does free state mean? Yes, free state means no. Free state means it can occur like carbon. And fused state or combined state means it combines with other elements to form compound. So carbon can occur as carbon. Where do we find carbon as carbon? In coal, diamond, and graphite. Only carbon is there. In combined state, carbon is found as carbonates of metals like calcium and magnesium carbonate, hydrocarbons, and in air like CO2 and carbon monoxide. Phenomena of existence of an element is more than one form, and each form has different physical properties but identical chemical properties is known as allotropy. Same element, different structures. Same element, different structures. This is known as allotropy. Carbon has how many allotropes? Carbon, first it has two allotropic forms. One is crystalline allotropic form and one is amorphous. What is crystalline and what is amorphous? मतलब उनको perfect shape रहते थे उनको Okay. perfect हुआ And we can feel the हाथ से हम feel कर सकते हैं but उनका shape उनका रहता है amorphous is powder. You can't feel it. It's smooth. So crystalline form is diamond, graphite, and fillery. We have studied it in our lower classes. And amorphous form is coal, wood, charcoal, animal charcoal, lamp black, coke, etc. Now tell me, coke, powdered carbon को coke बोलते. Wood charcoal. What is charcoal, by the way? जब हम bones से भी form होगा अगर हमने bones जलाया तो एक charcoal form होता है wood जलाया तो charcoal हाँ, तो charcoal means a coal which is formed by burning substances. Normal coal is which is obtained by mining. समझा? So coal, wood charcoal, animal charcoal, lamp black. What is lamp black? But what is lamp black? Dark color है, I know. black में कब सुना था मालूम है कब? पेरिस black point रहता है वो then black करते Lamp black means वो वांटा black है, by the way. वांटा black. Lamp black suit पता है आपको? Suit. Whenever you burn anything, you get a black color thread like substance. For example, if you're burning a diya, while burning a diya, you can see black color threads forming. मंदिर के ऊपर वाला black हो जाता है हाँ, that is soot. That is lamp black. काजल उससे बनता है. harmful है ना सरकार जब देखो Most of the cases. Now, crystalline form में first we have to study about diamond. One question is asked from diamond. 2 साल में तो एक बार पूछा है भाई. सबसे ज्यादा diamond पे ही पूछते हैं. Now, it is the hardest substance. See its melting point very high, 3600 degrees Celsius. It's a colorless, shining, transparent crystalline solid. It has a density of 3.5 grams per ml or centimeter cube. It is a bad conductor of heat and electricity. It burns in air at 900 degrees Celsius to give CO2. It is insoluble in all solvents. Due to the lattice vibrations, it has the highest thermal conductivity among all known metals. Diamond is not expensive because of its shine. Remember, diamond is expensive because of 3 reasons. 1, it is hardest. It can break anything. Second thing, diamond does not react with anything in the atmosphere. Third, it never changes its structure. Even if you keep a diamond for 1000 years, it will keep that shape for that long. कलर भी नहीं करता सब चीज उसको लेजर कटिंग करते हैं ना, शेप देते हैं. हाँ, कलर भी चेंज नहीं करता कलर भी चेंज नहीं करेगा, ऑफ कोर्स नहीं करेगा. वो कलर चेंज करने वाले एमरल्ड्स होते हैं अलग अलग. नाउ, diamond is a covalent solid. Covalent means a bond formed by sharing of electrons. So here carbon and carbon are forming strong covalent bonds, sharing of electrons, and they form very strong bonds, which is very difficult to break. The next is what
Each carbon atom is covalently bonded to 4 other carbon atoms situated around it tetrahedrally. 4 bonds, tetrahedron. It forms a tetrahedron like this. See, this is a carbon. This is a carbon. अरे यार. This is a carbon. This is a carbon. This is another carbon. This is another carbon, and this is another carbon. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अब भी जस्ट. हाँ, थोड़ी सी थी, ज्यादा नहीं. हाँ. See, this is forming a tetrahedron. 4 bonds on 4 sides. Now I haven't drawn it properly, but you will understand. Walaikum salam. देखो ऐसा अभी दिख रहा है tetrahedron. हाँ तो Like this, it forms a tetrahedron with 4 other carbon atoms. Then, second, hybridization is sp3. Remember, whenever you see single bonds, hybridization is always sp3. If you see double bond, it is sp2. This is sp3. And if you see triple bonds, it is sp. If there is single bond, it is sp3. Double bond is sp2 and triple bond is sp. So here carbon has all single bonds in diamond. That is why it is sp3 hybridized. Carbon-carbon bond distance is 1.54 angstroms. Diamond are transparent to light and have very high refractive index. Can you tell me what is refractive index? bending of light. Ability to bend light. That is refraction, whatever you told. Refractive index is the ability of that material to bend light or to slow the light. So its refractive index is 2.5. That means whenever light enters diamond, it lowers the speed of light by 2.5 times. So it has a very high refractive index. I think it has highest refractive index, 2.5. X-rays penetrate diamond. X-rays penetrate diamond but do not penetrate glass. So if you want to test diamond, pass X-rays through it. X-rays will pass through it. And if something is passing through it, there will be no shadow. So if you want to find the real diamond and fake diamond, pass X-rays through it and put a photograph plate on the other side. If the rays are passing straight, there will be no image. But if the rays is penetrating that particular substance, that substance will cast a shadow, and that shadow is the image on the X-ray. Whatever we get of our hand, legs on the X-ray, it is our shadow of the bones. Because X-rays cannot go ahead. So the bones cast a shadow on the plate, due to which we get the shape of the bones. Comment. Now, what are uses of diamond? It is used for cutting glass cutter, Very making bores for rock drilling, and for making abrasives. What is abrasives? What are abrasive? Abrasive क्या होता है? चल ये लग रहा है मुझे क्या? ज्वेलरी ज्वेलरी नहीं, रस्टिंग प्रिवेंट करने वाला सब्सटेंस है शायद अब्रेसिव. हाँ, अब्रेसिव का मीनिंग वही है. लोहे को ये करने के लिए डायमंड डायमंड कोटिंग सुना होगा ना, उसका आसना. हाँ, इट इज यू केपेबल ऑफ पॉलिशिंग और क्लीनिंग हार्ड सब्सटेंस. मतलब क्लीनर, वो स्क्रबर होता है ना, स्क्रबर टू क्लीन ऑल द थिंग्स, dirt and all. So diamond उसमें भी यूज होता है. Then it is used for grinding and polishing hard materials. ग्राइंडिंग तो पता चलता है. पॉलिशिंग में क्या होता है, कट करना पड़ता है ना उसको हर जगह से, और कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे घिसना पड़ता है. तो डायमंड उसको घिस घिस के शाइन कराता है. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग डाइस फॉर ड्रॉइंग थिन वायर्स फ्रॉम मेटल्स. डाइस पता है आपको, डाइस क्या होता है? हाँ, वो डाइस है, ये DIES है, डाइस.
वो तो मुझे भी पता चल गया। अरे जब हम मेटल लेते हैं ना, तो मेटल को देखो डाइस, मतलब तो आपने कारपेंटर को देखा वो ऐसे ऐसे घिसता है, वो फर्नीचर को एक कटर टाइप होता है देखो ऐसे। तो वैसे मेटल को घिसोगे तो ऐसे पतले पतले शीट निकलेंगे ना, या पतली पतली वायर निकलेगी, तो वैसा काम करता है वैसे टाइप का। बस मेटल पे करो वो जो फर्नीचर वाला काम है। देन बैट के लिए हाँ, then sequence of hardness: boron carbide is the hardest, then silicon carbide, then diamond, then glass, and last is iron. Boron carbide is the hardest substance. ये पूछ सकते हैं आपको which is the hardest substance: boron carbide followed by silicon carbide followed by diamond followed by glass followed by iron. अब डायमंड भी बोलते हैं, बोरॉन है ना। अरे वो कंपाउंड है बेटे, डायमंड एलिमेंट का है ना, एलिमेंट का ये मॉलिक्यूल है वो। कंपाउंड की बात किया तो वो है। नेक्स्ट, ग्राफाइट पता है आपको? allotrope of carbon which is more widely distributed in nature than diamond. डायमंड से ज्यादा ग्राफाइट मिलता है। It can be prepared by heating anthracite coal with small amount of iron or silica in an electric furnace. अब कोल के 3 टाइप होते हैं अगर आपको पता है: बिटुमिनस, एंथ्रासाइट एंड पीट। कौन है? नहीं, फर्स्ट होता है एंथ्रासाइट, जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है कार्बन। इट इज अ टाइप ऑफ कोल विच हैज लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। सेकेंड इज बिटुमिनस, इट हैज इन बिटवीन 50 to 60% आई गेस, एंड लास्ट इज पीट, द लोवेस्ट कार्बन कंटेंट कोल। ये ज्योग्राफी में भी है, आपको कोल के 3 टाइप है: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस एंड पीट। तो एंथ्रासाइट अगर आप लोगे, इसको हीट करोगे आयरन और सिलिका को, थोड़ा पाउडर डालो, आयरन का पाउडर या सिलिका का पाउडर, you'll get ग्राफाइट। एंथ्रासाइट कोल को हीट करोगे तो these act as catalyst, आयरन और सिलिका act as catalyst. Now what are properties? We know it is a shiny gray opaque solid. ग्राफाइट कहाँ पे देखा है आपने? पेंसिल के लेड में ग्राफाइट ही है, तो शाइनी है, ग्रे दिखता है। ओपेक सॉलिड, व्हाट डज ओपेक मीन? पर नहीं दिख इट डजंट अलाउ लाइट टू पास। इट इज सॉफ्टर देन डायमंड, ऑफ कोर्स इट इज सॉफ्टर। दांत से चबा देते हैं कुछ कुछ बच्चे पेंसिल को। इट हैज अ डेंसिटी ऑफ अबाउट 2.25 grams per ml। डेंसिटी है, दैट इज व्हाई इफ यू break a lead of the pencil, if you put it in water it will settle down, it will not float away. Then it has a melting point which is very high, 3500 degrees, मतलब अच्छा खासा melting point. It is a good conductor of heat and electricity. Graphite is a good conductor of heat and electricity. Then it is also pure but less than that of diamond. मतलब डायमंड से कम परसेंटेज है प्योरिटी का। डायमंड इज 100% कार्बन, इट इज 95 to 97% कार्बन. It burns in air at 973 to 1073 Kelvin to give CO2. Then two-dimensional layers structure having regular hexagonal sheets. Have you seen beehive? ऐसा होता है कुछ तो। अरे एक मिनट, किधर गया? ऐसे होता है ना beehive। तो ऐसा शीट्स आपको देखने मिलेगा, एक शीट ऊपर एक शीट नीचे। So they have one sheet above other and the sheet slide through each other. That is why they conduct electricity. ये जो शीट है ना, इसके बीच के स्पेस में इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द स्पेसेस बिटवीन द शीट्स. Now only 3 of the 4 valence electrons of carbon participate in bonding. Carbon has 4. हाँ शाबाश भाई, हाँ बोलो ना, क्या बोलते हैं? हाँ पता है मुझे, लाइव पता है. हाँ. Then carbon has 4 electrons in its valence shell, but only 3 electrons participate in bond, and that one free electron moves in the hexagonal sheets. And then this fourth free electron is responsible for its conductivity. Now see what is the carbon-carbon bond. The carbon-carbon bond distance in graphite is shorter than diamond. Graphite is 1.42 angstrom. Diamond was 1.54 angstroms. It is insoluble in ordinary solvents like water, alcohol, ether, etc. One thing they haven't added is graphite has sp2 hybridization. Diamond had sp3,
carbon bonds. Here it is sp2. Please remember. Then let us go to uses. Graphite is used in making electrodes. What are electrodes, Bhuvan? In a cell, we have two electrodes. One is positive electrode and one is negative, cathode and anode. So sometimes those rods are made of graphite. Then it is used as lubricant for heavy machines. What is a lubricant? Not allow friction. Which prevents the friction, because friction can cause damage to the part of the machine. Then it is used in manufacture of crucibles, which can withstand high temperatures. It is also used for manufacturing some material or some utensils which can withstand high temperatures, can tolerate high temperatures. Then when mixed with clay, it is used for making lead pencils. Then it is also used as moderator for fast moving neutrons in atomic reactors. What is a moderator? Controller. See, in a nuclear reactor, neutrons move at a very fast speed. And that movement of neutrons causes energy formation. But neutrons are so fast that we as humans cannot control their speed. So we require some controller oblique moderators. So graphite rods are inserted into the nuclear power plant so that the moving neutrons, when hit to the graphite rod, they lose their velocity. If they're losing their velocity, what does that mean? They're losing the energy, kinetic energy. If they're losing the energy, that means now we can control the flow of energy. What does graphite do? It reduces the speed of neutrons and it thereby reducing the energy. And therefore, we can control the flow of energy. If you don't know about this, please search Chernobyl disaster. Ukraine mein, which was a part of Soviet Union, in the old 70s or 80s, there was a big disaster in a nuclear plant known as the Chernobyl disaster. There, the graphite rods, which were used as moderators, were not inserted at the right time, due to which it caused a blast. And that blast, the radiations released from the blast almost reached up to Berlin, Germany. Itna फैल गया वो radiation. That area is still radioactive. Chernobyl. It's around 130-kilometer radius. That area is right now also very reactive. Itna radiation छोड़ता है. That is why moderators are important. Please remember. Then let us go to third one, fullerene or buckyballs. They were first discovered in 1980. General formula is C2N, where N starts from 30 to 48. 30 to 48. Buckminster fullerene, C16, has a soccer ball like shape. You know a soccer ball? Yes, sir. We have this pattern Okay. everywhere. बहुत अलग है. कैसा होता है? यूएस सॉकर बॉल नहीं चल रहा. सब लोग बोलते हैं सर. अमेरिकन, खाली अमेरिकन बोलते हो और कोई नहीं बोलता. And they are stupid by them. So, soccer ball means our normal football, white and black pattern. So, buckyballs or Buckminster fullerene look exactly like that, with 12 pentagons and 20 hexagon rings. Pentagon and hexagon rings are there to make that complete three-dimensional sphere. While C70 has a rugby ball shape. A rugby ball is like this. It has that kind of shape. Very good. And in fullerene, each carbon is sp2 hybridized. Fullerene is sp2 again. Then these are the only pure form of carbon. Then they are soluble in organic solvents due to their covalent nature and form colored solutes. Not important. These react with metal of group 1 and form solid CK3, C60. These compounds act as superconductor. Please remember, group 1 elements with carbon 60, which is fullerene, form superconductors. What are superconductors? Which has zero resistance. And see what is the temperature? 18 Kelvin. 18 Kelvin is less or more? Very less. 18 Kelvin means it is around minus 255 degrees Celsius. Absolute zero ke nazdeek hai. It is near absolute zero. So superconductors do not exist at normal temperatures. That is why in the last discussion I told, discover or invent a superconductor at room temperature.
get a Nobel Prize. हमने बोला मैं करूंगा मैंने की, मैं ऐसा कुछ नहीं बोला, मेरे बोला मुंह में तो डाल मत. मैं करेगा Now, microcrystalline form of coal. It is a complex mixture of compounds of carbon, mainly hydrogen, oxygen, and some free carbon. Now, coal was formed by decomposition of large amount of plants and animals. We know coal is a renewable or non-renewable source. non-renewable Non-renewable. Why? Because it takes millions of years to form. Because animals decay, dead, and then under high pressure, it is converted into coal. So we have known this in geography also. It is a slow chemical process, and the process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. All the dead and decaying matter, the conversion of those matter into carbon or coal is known as carbonization. Peat is the most inferior. Peat is the most inferior. सबसे कम percentage carbon का होता है. Anthracite is the most superior. Sorry, anthracite is 90%. इतना pure है. Bituminous coal is most common variety of coal used in households. तो घर पे कैंप फायर करते हैं, कोल लगाते हैं, बारबेक्यू करते हैं, everything bituminous. Then wood contains about 40% carbon. Wood contains 40%. तो चारकोल भी 40% ही होगा. तो कितना कम है? एंथ्रासाइट से भी कम है. That is why charcoals are cheap. You get 1 kg of charcoal around 80 rupees. And 1 kg coal लाने जाओ, it's around 500 or 700 I guess. I don't know, but maybe. Then regarding geography, you know, Kashmir is the largest source of coal in India. Your homework is what kind of coal does India have out of these four? And Kashmir is the largest producer of that coal. That particular. कश्मीर में से ज्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं करता मतलब नहीं करते, लेकिन सबसे ज्यादा वही है, रिसोर्स वही है, कश्मीर में ही है. तो मुझे बताना है कौन सा टाइप है कल. हाँ. देन झारखंड में कोल माइन से झारिया. वो मालूम है लेकिन सबसे ज्यादा निकालते झारखंड छत्तीसगढ़ एंड झारखंड. क्यों पता है? क्योंकि वहां पे इतना नेचर इतना ज्यादा ये नहीं है ना. बोलते क्या बोलते हैं उसको, जीन पूल इतना ये नहीं है, स्ट्रांग नहीं है. इन जम्मू एंड कश्मीर देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी एंड आल्सो जीन पूल इज वेरी प्योर. वहां पे ह्यूमन डिस्टर्बेंस नहीं है ज्यादा. झारखंड में आप सोचो, ड्यूरिंग ओल्ड टाइम्स सबसे पहला जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री था जमशेदपुर, वो कहाँ पे था? झारखंड एंड छत्तीसगढ़ के बीच में ही है कहीं तो जमशेदपुर. तो वहां से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ है. सोच कर देखो, तो वहां पे ऑलरेडी वो सेटअप बन चुका है. एंड दिस पर्टिकुलर स्टेट और वॉट एवर यूनियन टेरिटरी nowadays they call, it was famous only for tourism. That is why नेचर को कोई छेड़ा ही नहीं है वहां पे कश्मीर में. झारखंड में नेचर को काट फाड़ के कुछ भी किया है. अभी तो जंगल इतना ज्यादा फैला हुआ है वो कि वहां पे इरोजन्स बहुत होते हैं अभी. During rainy season, they are almost on the verge of death, the people at Jharkhand and Chhattisgarh. Bituminous होता है, but कश्मीर में कौन सा है बताओ? Bituminous ही है क्या? वो आपका होमवर्क है. Then uses of coal. Coal is used as fuel. ये तो पहले भी पता है हमें, coal engines थे. Coal is used in manufacture of fuel gases like coal gas, water gas, producer gas. You know what is water gas? CO and H2. What is producer gas? CO and N2. Producer gas is CO and N2. Please write. CO plus N2 is producer gas. CO plus H2 is water gas. Then, see, they have given coal gas is a mixture of CO, H2, methane, and hydrocarbon. Carbon monoxide, hydrogen, methane, and any hydrocarbon. Water gas is mixture of carbon monoxide and hydrogen, and producer gas is a mixture of carbon monoxide and anthracite ही है ना. सबसे सेमी एंथ्रासाइट है. I guess 85% carbon content होता है. Semi anthracite, 79 to 85. Then coal is also used in manufacture of synthetic petrol, coke, natural gas, etc. That process is known as fractional crystallization. Fractional distillation, sorry. Coal is a source of organic compounds like benzene, toluene, phenol, aniline, naphthalene, phenanthrene, anthracene, or source of organic compounds.
Then what is charcoal? Bhuvan? Black, soft and highly porous substance. What is highly porous? ये रहता है तो रुकता हूँ। क्या? एकदम ये नहीं वो नहीं, ओल रहते फोर्स ज्यादा रहते हैं pores ज्यादा होता है. हर पर फिर ये हो जाता So that is why it has large surface area, and that is why it is used in cleaning your face, face wash, face packs. वो क्या होता है? Scrub. है आप कल को आकर आप लगा के ना अरे नहीं भाई, वो अरे एड में दिखते नहीं हो क्या इडियट्स? तू तो सबसे ज्यादा देखता है. Then Then, due to its porous nature, it has high surface area. And remember, substance which has high surface area are good adsorbents. What does adsorbent mean? It is a material which is, what do we call it? It has a capacity to stick other materials to its surface. तो dirt क्या है? एक other material है, वो stick करा देता है अपने surface पे. इसलिए चारकोल का यूज होता है. एंड एक्टिवेटेड चारकोल सुना होगा बहुत. Activated charcoal is powdered charcoal, एकदम बारीक पाउडर. That is activated charcoal. Why? और surface area बढ़ा दी. जितना ज्यादा आप पाउडर बनाओगे उतनी ज्यादा surface area बढ़ेगी. Same. पाउडर भी इसलिए बनेंगे हाँ, of course. It is prepared by strong heating of wood in closed vessels in absence of air. Thus, charcoal is prepared by destructive distillation of wood. Charcoal is most reactive form of carbon. जलता बहुत है वो. जलता बोले तो ऐसा आग दिखाता है. ज्यादा देर नहीं जलेगा चारकोल. Hardly it will burn for 15 to 20 minutes. But it will show large amount of fire, flames. Then, charcoal is used as black pigment and as fuel for domestic heating purpose. अभी भी गांव खेड़ों में यूज होता है. Then, charcoal is however a good fuel than wood because charcoal has higher calorific value. What I was telling you, per gram it releases more heat. It is releasing 33 kilojoules per gram. वुड कितना करा है? 17 किलो जूल पर. तो वुड से तो बेहतर ही है. एंड चारकोल डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक while burning, whereas wood produces lot of smoke on burning and pollutes air. Why doesn't charcoal produce smoke? ऑलरेडी जल चुका है वो. जले हुए को और कितना जलाओ? Now, charcoal can be obtained in three varieties. One is wood charcoal. It is obtained by heating wood in limited supply of air. Most impure form of carbon is wood charcoal. Most impure. It is highly porous and therefore used as adsorbent for gases and in making gas masks. आपने देखा होगा स्मोक स्क्रीन और गैस मास्क पहनते हैं पुलिस वाले, उसमें ये चारकोल वारकोल ही होता है. स्मोक मास्क जो होता है ना, ऐसा वो पाइप वाइप छोड़ते हैं, तो वो पाइप के अंदर चारकोल होता है. वो चारकोल उस गैसेस को वही रोक देता है, अंदर आने नहीं. एनिमल चारकोल इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ बोन्स एंड इज आल्सो नोन एज बोन ब्लैक. जैसे भुवन बोल रहा था, it contains about 10% carbon, very less amount. It is mainly used for decolorizing sugar syrup and in the manufacture of sugar and other organic substances. That is why you might have heard that please, before eating something, please see the content or please see the process how it is made. Many times they say नॉनवेज वाला तो अभी sugar का होगा नॉनवेज बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर. नॉनवेज नहीं बोल सकते. अभी देखो यहाँ पे उन्होंने ये बोला सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है. इसका सब्स्टिट्यूएंट कौन है? एनिमल चारकोल का सल्फ्यूरिक एसिड है. तो आपको जो एक्चुअल में हम शुगर क्यूब्स खाते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर. ये ओल्ड मेथड है. क्या तू अभी हर जगह नॉनवेज बोलते छूटेगा? नेक्स्ट इज शुगर चारकोल. इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अमॉर्फस कार्बन. प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अमॉर्फस कार्बन obtained by action of concentrated sulfuric acid on cane sugar. केन शुगर पता है हमें? सुक्रोस, गन्ने को जूस, गन्ने का जूस, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालो, नीचे काली काली पाउडर या काला काला सेटलमेंट मिलेगा. वो कार्बन का है और ऊपर पानी मिलेगा. शक्कर का जो मीठापन है वो चला जाएगा. सल्फ्यूरिक एसिड उसे जला देगा. जलाने की बात मैं नहीं जला रहा, सल्फ्यूरिक एसिड जला रहा. नाउ द लास्ट पार्ट फॉर टुडे, देन वी हैव टू स्टार्ट विद फिजिक्स. फ्यूल. Fuels are substances which produce heat and sound upon heating. Example: coal, petroleum, wood, kerosene, etc. In general, fuels are compounds of carbon and hydrogen. Ideal fuel is cheap,
readily available, readily combustible, and easy to transport. It should be available, it should be combustible, it should catch fire, and it should be easy to transport. Then fuel efficiency is expressed in terms of calorific value. The amount of heat energy which is produced by complete combustion of 1 kg of fuel is known as calorific value. So they will burn various different substances 1 kg and they will see how much heat is. That is how calorific value is called, found. On the basis of origin, fuels are of two types: primary fuels and secondary fuels. Primary matlab kya? These are directly obtained from nature, wood and what? Petroleum. And what are secondary? They are obtained from primary fuels. Yes, petrol is not in nature, diesel is not in nature, crude oil is in nature. From crude oil we form petrol, diesel, kerosene. So that is a secondary fuel. What are importance of liquid and gas fuels? Liquid fuels are more useful than that of solid fuels because these fuels do not produce residue. Liquid and gas produce do not produce residue. Residue matlab kya hai? आफ्टर बर्निंग जो रहता है एशेस बोलते हैं. Ash. Okay, yes. So liquid and gas doesn't produce that. Second is what? They burn easily without smoke. अब आपने पेट्रोल को जलते देखा है, स्मोक देखा है कभी पेट्रोल के जलने? कुछ कहा दो. गाड़ी की वो गाड़ी में पेट्रोल में मिलावट होगी इसलिए जल, नॉर्मल पेट्रोल नहीं जलता. Have low ignition temperature. What does low ignition temperature mean? सर जल्दी से बंद हो जाता है. It burns at a very low temperature. फौरन फटाफट आग लग जाए. तूने बोला बर्न करने से बंद हो जाता है. क्या बोला है? क्या बोला? जल्दी से बंद हो जाता है. अच्छा ठीक है, जल्दी से बंद हो जाता है, मुझे ऐसे सुन. क्या सर? Then their calorific value is high, so produces more heat. Petrol and diesel burn very bright. They give lot of flames. So high calorific value, high more heat. So petroleum we will study tomorrow, and we shall do octane number. Tomorrow my session, I think I will finish till uses of ozone, till ozone. पूछ. डीजल में फर्क है. पेट्रोल में और डीजल में फर्क ये है कि पेट्रोल जो है वो ऑक्टेन का पॉलीमर है. ऑक्टेन सुना है कभी? आपको मैं प्रैक्टिकल फर्क बोल रहा प्रैक्टिकल फर्क पूछ रहा है. डीजल थोड़ा ग्रीनिश होता है कलर. हूँ. मतलब ऐसा नहीं, लोग बोलते हैं डीजल गाड़ी लो सस्ता है. बताता हूँ कैसे. हाँ बेटे गलत. डीजल गाड़ी महंगी होती है पेट्रोल. डीजल गाड़ी महंगी है. क्यों पता है? क्योंकि डीजल सस्ता है. और पेट्रोल की गाड़ी सस्ती क्यों? क्योंकि पेट्रोल महंगा है. पेट्रोल की गाड़ी और सर्विस अच्छी रहती है इसके इंजन की. बिकॉज क्यों ऐसा है? डीजल पेट्रोल से ज्यादा वोलेटाइल है, लेकिन डीजल जो है वो जल्दी उड़ जाता है पेट्रोल के कंपैरिजन. तो इसका मतलब क्या है कि तुम थोड़ा भी हीट हो गया तो डीजल जल्दी अपना गैसियस फॉर्म में बदलेगा. तो समझो, अगर आपने इंजन में या फ्यूल टैंक में डीजल ज्यादा देर के लिए रखा, जब तुम गाड़ी ज्यादा देर के लिए चलाते हो तो डीजल ज्यादा घूम रहा है इंजन में, और इंजन ऑलरेडी गर्म होता है मूव कर करके. तो डीजल उसके वजह से अपना फॉर्म चेंज करता है, लिक्विड से गैस फॉर्म में जल्दी जाता है. उसके वजह से क्या होता है? उसके वजह से इंजन ज्यादा जल्दी हीट होता है. डीजल इंजन हीट फास्टर as compared to petrol engines, but diesel engines have more power than petrol engine. पेट्रोल के प्रोस क्या है? पेट्रोल के प्रोज ये है, तेरे को बोल गर्म गाड़ी अच्छी लगेगी चलाने के लिए क्या ठंडी गाड़ी? अगर लॉन्ग डिस्टेंस चला रहा है तो आपको ऐसा गाड़ी चाहिए जो ज्यादा तकलीफ ना दे. अगर डीजल गाड़ी ज्यादा पुराना रहा तो वो बहुत परेशानी दे. दूसरा, पेट्रोल का प्रो जो आपने पूछा, पेट्रोल का प्रो ये है कि पेट्रोल का गाड़ी जो है आवाज नहीं करता. डीजल का गाड़ी अभी तो ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया कि डीजल का गाड़ी भी इतना आवाज नहीं करता. बट पहले आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते थे कि पेट्रोल कौन सा है और डीजल कौन सा है. हाँ, पहले इंडिका देख लो, टाटा का सुमो देख लो, उनका आवाज पे से ही समझ. डीजल ही थे. महिंद्रा टाटा दोनों डीजल वेरिएंट में आते थे, और मारुति वाले सिर्फ पेट्रोल में आते. डीजल वेरिएंट आता है अभी. बट अभी टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड सो मच दैट नाउ इवन डीजल कार्स डू नॉट साउंड दैट मच. जैसे सबसे पहले ये नॉन साउंडिंग डीजल कार ये मर्सिडीज ने बनाई. ऐसी डीजल कार बनाई कि जिसका आवाज ही नहीं है. ई सीरीज E250 शायद 2008 या 9 में बनाई थी.
पहला ऐसा कार जिसने आवाज ही नहीं किया, ऐसा फर्क ही नहीं समझ आया कि ये पेट्रोल है या डीजल। तो फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी अभी ऐसी आई है कि नॉर्मल आपको टाटा के कार में भी, मारुति के कार में भी आता है समझ में कि डीजल है लेकिन आवाज नहीं है। लोग डीजल क्यों लेते हैं? बिकॉज चीप है ना। कंपेयर करो पेट्रोल डीजल, अभी तो ऑलमोस्ट 10 रुपीज का फर्क है, पहले बहुत था। पहले अराउंड 30-40 रुपीज का डिफरेंस। So today we are going to start with new chapter in physics. So we did electricity last time. We finished electrostatics. अरे chemistry आ गई। कर ले हम मैग्नेटिज्म स्टार्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, न्यू चैप्टर and magnetism. Now we did electricity, we did electrostatics. Up to now we were considering charge as stationary body. Electricity में हमने देखा charge was moving, it was forming a current, current had resistance, resistance caused different heating effect, many other effects. We saw combination of resistors, then we saw types of cells, we saw EMF of cell, we saw Kirchhoff's law, we saw many things when the current was moving. We saw when current remains stationary, what happens? Electrostatics mein we saw Coulomb's law. Either one charge body will attract another charge body or it will repel another charge body, depending on the magnitude of both the bodies. If one is positive, another is negative, they will attract. If both are positive, they will repel. We studied these properties on the basis of their stationary position. But one aspect we did not study, that was, what if moving charges, when they are moving, when charges are moving, we saw they produce electric current. But what if those electric current are producing magnetic fields? Then we will study that right now. That why does a moving charge produce magnetic field when it is going from one place to another? So this particular thing was given by Mr. James Oersted exactly 204 years ago, 1820 में. Mr. James Oersted did a simple experiment. The experiment was not exactly for magnetism. He was trying some other experiment, but he got a conclusion for this particular magnetic effect. What did he do? He put a magnetic compass. Magnetic compass पता है आपको? So let us imagine this is a magnetic compass. This is the North Pole, this is the South Pole. This is a magnetic compass. So he kept his magnetic compass and he brought a wire near to that compass. And that wire was connected to a battery. Wire was connected to a battery. That means the wire will now what will it do? It will pass current will move through the wire. So when he did not actually perform this experiment. He just kept that wire randomly there, and he forgot to switch off the battery button. So all these experiments are accidents, huh? By the way. So he forgot to switch off the battery. So what happened when current was passing through the wire? This needle started deflecting. This needle deflected in the upward direction. वायर ऊपर जो वायर रखा हुआ था ना, देखो ये अभी समझो हमारा कंपस है, ये कंपस है, इसके ऊपर उसने एक ऐसा सेटअप लटका के रख दिया और ये वायर है। अब ये वायर में से करंट जा रहा है, तो ये वायर के वजह से ये हिलने लगा इसका पार्ट. The pin started to move and that started creating noise. So he just then observed that particular movement. He started thinking, what is happening? Then he switched off the battery. Then he saw the pin came back to its original position. And he thought, there is something happening here. So what did he do?
he changed the terminal. पहले मतलब जो पॉजिटिव था अब उसको नेगेटिव बना दिया. That means he reversed the direction of current. So when he reversed the direction of current, the movement of the pin also reversed. That means if in the first case it was moving upwards, now it will move downwards. Then he came to a conclusion that charges when they are moving, first what hit his mind was compass only responds to magnets. Why? Because magnetic fields and magnetic waves are there. Compass should respond only magnetic fields. These are currents. How is that possible? But when he reversed the charge, he saw the reverse move. So he came to a conclusion that when charges move or moving charges in a conductor generate magnetic field. Moving charges in a conductor generate magnetic field around them. Now, if the conductor is straight, magnetic field will be concentric circles. What is a concentric circles? What are concentric circles? Which has the same center. Circles which are one into the other, which have the same center. Yes? So, you're getting it. Oster's experiment. Then once he brought that conclusion, then scientists started working on it. Now let us see what is happening. पागल हो गया, of course. अब मिल ही गया उसमें, मतलब now one of them just gave them a path to start a new branch. They started their discoveries and all that theories and all. Now let us study what they did. ये हिस्ट्री आपको बताया नहीं जाता. That is why many people get confused. ये अचानक बायोट सावर्ट लॉ कहाँ से आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ गई. तो वो ओस्टर्ड did that experiment which led to this particular experiment done by Biot and Savart. These two are French scientists. Ostrad was also a French scientist by the way. So what is electromagnetics? It is a branch of physics in which we studied the effect of magnetic field produced due to current or moving charge. Also known as magnetic effect of electric current. So Ostrad was the one who started all this. Then what is magnetic field? Please see. It is a region or space around a magnet or current carrying conductor or a moving charge in which its magnetic effect can be felt. For example, just try to bring two magnets together. If you are bringing two opposite ends, same ends, they will never come to each other. We feel some physical repulsion. See, we can't see that repulsion, but we can feel it. So that particular zone is the magnetic field. Getting it? Then unit of magnetic field is Tesla. SI unit is Tesla. CGS unit is Gauss. CGS unit is G. Also known as Gauss. 1 Tesla is 10 raised to the power 3 Gauss. What do you think? Tesla is a big value or small value? Very big value. You want to know how big? Search Earth's magnetic field. Google search. Corona. Earth's magnetic field. Search करो. Value of Earth's magnetic field. कितना आता है देखते हैं. मैग्नेटिक नैनो टेस्ला कितना 22,000 67,000 nano Tesla. Getting it? That means 0.00022. इतना कम है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर आपको 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया ना, तो आपके ब्लड में का जो आयरन है वो आपके बॉडी को चीर के बाहर आ जाएगा. इतना स्ट्रॉन्ग. आई एम नॉट जोकिंग. Why do you want to try genocidal methods? So 1 Tesla is so strong that the small amount of iron which is present in your blood or hemoglobin can pierce your body and come out if kept in 1 Tesla magnet.
हड्डियों को तक के चीर देगा, इतना स्ट्रॉन्ग. So magnetic fields are dangerous. And black hole has large amount of magnetic field. Black hole के अंदर magnetic field around thousands or millions of Tesla है. समझ लो क्या? हाँ? Then Biot-Savart law. Now let us go to Biot-Savart law. According to this law, the magnetic field dB, small magnetic field, at a point P, can you see point P on the diagram? Point P, due to small current element dl. Now see, current element. Now this is an entire conductor which has a length of L. So dl will be small current element. Is given by mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square. How do we get this conclusion? Is dB is directly proportional to current. More the current, more the magnetic field. dB is directly proportional to current element. जितना बड़ा element, उतना बड़ा magnetic field. dB is inversely proportional to the square of the distance. जितना दूर होगा उतना कमजोर होगा field. And dB is proportional to sin theta. Why sin theta? Because sin theta is one of the trigonometrical identities whose value increases as we increase the value of theta. Now here, if theta becomes 90, it is maximum. So that is why we take sin theta. If we bring them together, it comes this ideal sin theta by r square. And instead of that constant, we wrote mu naught by 4 pi. Mu naught by 4 pi. Mu naught is permeability of free space. What is mu naught? Mu naught is permeability of free space. Mu naught का वैल्यू होता है 4 pi into 10 raised to the power minus 7. 4 pi into 10 raised to the power minus 7 टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर. ये आपको आगे यूनिट मिल जाएगा. Now if the value of mu naught is 4 pi into 10 raised to minus 7, can you tell me the value of mu naught by 4 pi? 10 raised to minus 7, because 4 pi will get cancelled. So mu naught by 4 pi is 10 raised to the power minus 7. It's a universal constant by the way. So let us see here. See, now I want to remove this sin theta. I want to remove this sin theta. But to remove this sin theta, I need to put a relation between current element and R. And there is no R in the upper numerator. So I multiply the numerator and denominator by R. What do I get? R cube आएगा नीचे. And it will be dlr sin theta. Now, sin theta निकालने के लिए कौन सा प्रोडक्ट लेते हैं वेक्टर का? क्रॉस प्रोडक्ट. So I will get dl cross r upon r cube. मिलेगा? तो वही उन्होंने आगे वेक्टर फॉर्म में शॉर्टकट किया. उन्होंने ये बताया ही नहीं. देखो dl क्रॉस r दिख रहा है, dl क्रॉस r. एंड म्यू नॉट का वैल्यू भी दिया है, देखो 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू -7 वेबर पर एम्पियर मीटर. वेबर भी बोलते हैं उसको. आगे, नाउ व्हाट आर द रूल्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? वन इज राइट हैंड palm rule, which I love the most. If we spread our right hand in such a way that thumb is towards the direction of current and fingers are towards that point where we have to find the direction of field, then the direction of field will be perpendicular to the path. Now here the point P is like this, and where is my current? Like this. So if I do like this, perpendicular means magnetic field is inside the palm. This means inside. This means outside. Or Maxwell's right hand screw rule. Have you ever tightened a screw using a screwdriver? Yes, how do we rotate? Clockwise or anti-clockwise? clockwise. So if we are moving it clockwise, that means it will go inside. And if you are moving it anti-clockwise, it will move. देखो मैं भी screw का पूछ. Then, if right-handed corkscrew is rotated so that its tip moves in the direction of flow of current, then through the conductor, then the rotation of the head of the screw gives the direction of magnetic field. So the screw which is going inside is the direction of current, and the rotation is magnetic field. So if your
putting the current inside, that means how will the magnetic field move? Clockwise. If you want to unscrew, what will you do? Anti-clockwise. So magnetic field will be anti-clockwise and current will be out. Current in magnetic field clockwise, current out anti-clockwise. Now, there are some formulas here, out of which I would suggest only this one is important. The first one and sixth one. Yes. And 10th and 11th. Now let us see why. Now if you want to find magnetic field on a finite length current carrying conductor, finite means that length is fixed. And you have to find a point P. You have to find magnetic field at point P. So what is the formula? Mu naught by 4 pi. I into D. D is what? The distance from the wire to the point. Sin theta 1 plus sin theta 2. Why? Because angle that point can be from downwards, it can be from upwards. That is why we have to take two angles, theta 1 and theta 2. Then second is what? Second formula is current carrying loop. If you want to do seventh one, why? Formula is mu naught by 4 pi. Now what was our formula? IDL sin theta by r square. This was our formula. Now if the current is going in this direction, my magnetic field will be perpendicular inside. So sin theta 90. So if I integrate this, which are the constants which will come out? Mu naught by 4 pi bahar aayega, and I will also come down and r square will also come out. DL will be inside. Now DL here is a small current element, this one DL. So integrate करोगे तो क्या आएगा? 2 pi r आएगा into 2 pi r. Pi cancel, 2 1s are 2 2s are, 1 r cancel. Did you get this formula? Mu naught I by 2r. This is the formula. देखो दिख रहा है mu naught I by 2r. And if there are n number of turns, that means n number of coils. You just have to add one n into it. Mu naught ni by 2r. Then 9th and 10th solenoid. What is the formula? Mu naught ni for center, and for the terminal it is half of that. Center का half होता है terminal पे. Mu naught ni. Easiest है solenoid. Mu naught ni by 2. These four formulas are very important, nothing else. Then let us go to Ampere's circuital law. Do you know Gauss law? What is Gauss law? Total electric charge and The electric flux enclosed in a conductor is equal to the net current, net charge present inside the conductor, but it should be closed conductor. Same here. It states that line integral of magnetic field along any closed path in vacuum is equal to mu naught times the total current. Mu naught times, यहाँ पे epsilon naught times क्या था? The total charge. यहाँ पे mu naught times current है. समझ में आ रहा है? Line integral B dot dl is equal to mu naught I. Simplified form क्या होगा? B I नहीं लिखना था उन्होंने, BL लिखना है उन. BL is equal to mu naught I net. Now equations क्या होगा? At every point of the closed circuit, B is parallel to DL. Current element should always be parallel to magnetic. Magnetic field at every point, the closed circuit remains uniform. In a closed circuit, the magnetic field will be uniform. For example, if you draw magnet, lines go from north to south. They will always be regular. There will be no change of shape. Circle जा रहा है तो circle में ही रहेगा वो. Now let us see the application. पहला application देखो क्या है. Straight wire of infinite length. क्या किया होगा? B dot dl है, straight length है. तो straight length है, perimeter 2 pi r. B into 2 pi r is equal to IL, mu naught I.
तो 2 pi r देखो नीचे आ गया, म्यू नॉट I by 2 pi r. Then magnetic field due to conducting rod of a radius r at a distance small r from the rod, B is equal to म्यू नॉट I by 2 pi r square into small r. ये इंपॉर्टेंट नहीं है सेकंड वाला, ये तो हमें पता है म्यू नॉट I by 2r. Magnetic field due to hollow cylindrical pipe. Cylindrical pipe, what is the area of cylinder? Pi r square h. हाँ, वो वॉल्यूम है, फिर क्या है सिलेंडर का एरिया? कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया. पाई आर एल, पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया, फिर क्या है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच. वो टीएस है कि पूरा? हाँ, 2 पाई आर एच सही है, 2 पाई आर एच कर्व सर. अरे यार, कौन सा गाना बजा रहा? तो एच एंड एच विल गेट कैंसल्ड ऑन बोथ द साइड्स, सो बचता क्या? म्यू नॉट बाय 2 पाई I by r. क्या हो गया, कहाँ घूम के आया? ठंड लग रही है. हाँ. Now, force between two parallel current carrying conductors. For let us imagine two conductors, one is carrying I1 current, another is I2 current. Now, if they are moving in the same direction, if they are moving in the same direction, what do you think? They will repel or attract? They will repel. Why? See, current, if they are moving in same direction, they will form magnetic field around them. So magnetic field lines will be in circles. Circles will overlap. Or for example, direction of current is like this. Finger is our current, and this is the point. So magnetic field is outwards. Now, current is up. Point is this side. These are the two conductors. If I'm taking first conductor as a reference, point will be here. Current will be up. Magnetic field like this. Point here, up, magnetic field outwards. Both are in opposite direction. Magnetic field cancel out each other. That is why repulsion. सेम में होगा तो अट्रैक्शन होगा. तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, एफ का म्यू नॉट बाय 4 पाई टू I1 I2 by r square. 2 I1 I2 by r square. Can you compare this with Newton's law of gravitation? G m1 m2 by r square. Can you compare this with Coulomb's law of electrostatics? 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. Can you see the relation? Huh? Then force on a moving charge, QVB sin theta. What is Q? Charge. Now, they have given a very shortcut method for this. पहली बात तो पूरा गलत है, मैं बताता हूँ आपको क्या करना. अब you are having a magnetic field, parallel lines. Let me take a notepad for this. This is wrong. So let us imagine uniform magnetic field. Uniform magnetic field has parallel lines. Yes. Now my charge is moving like this. This is my charge Q. Velocity vector is like this. Now my question is, if I am going quietly without disturbing you, will you disturb me? So here, is the charge disturbing the magnetic field? Is the charge disturbing the magnetic field? No, because they are parallel to each other. So here, Q is parallel to B. Or instead of Q is not a vector quantity. Charge is not a vector quantity. I will put V is parallel to B, magnetic field. So here, force will be equal to 0. No force applied, no disturbance. Now let us do another one.
Now this charge is going anti-parallel. Now I went this side and went out of the class without you guys being disturbed. Will you be irritated? If I come slowly from the door and sit here without disturbing you, will you be irritated? So when the q velocity or the motion of q is anti-parallel to magnetic field, then also there is no force. Why? Because there is no disturbance. Anti-parallel to b, force will be 0. Now b becomes perpendicular to b. That means now my body is coming like this. Let us imagine I'm pushing you all guys and coming here. So you guys will get irritated. Now magnetic field is disturbed. Right. Of course disturbed. मार देगा. So if magnetic field is disturbed, it will try to force the body. Why are you disturbing me, man? Newton's third law. Every action has disguided action. So there will be a reaction. And that reaction is known as magnetic force. That reaction is known as magnetic force. So here there will be magnetic force. Magnetic. Which will be directly proportional to the charge. अगर चार्ज ज्यादा होगा, आने वाला मोटा होगा तो ज्यादा चिड़चिड़ होगी. धक्का देके आ रहा है कोई तो ज्यादा चिड़चिड़ होगी ना आपको. So it is directly proportional to charge. Second, magnetic force is directly proportional to the velocity. और अगर स्पीड में धक्का देके चला गया फिर तो खून करने का दिल हो जाएगा. Directly proportional to velocity of charge. And also magnetic force is directly proportional to magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड. अब रिस्पॉन्स देने वाला भी तो स्ट्रॉन्ग चाहिए ना. तो लप्पू सा सचिन रह गया तो फिर हो गए काम. आपको रिस्पॉन्स तो देने आना चाहिए. एंड मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. व्हाई साइन थीटा? कैन यू टेल मी? बिकॉज परपेंडिकुलर पे साइन थीटा मैक्स होता है, मैक्सिमम होता है ना परपेंडिकुलर पे साइन थीटा. So now if I bring them together, I get F is proportional to QVB sin theta. If I want to remove this, I will put F is equal to K QVB sin theta. And in SI system, K is equal to 1. In SI system, K is equal to 1. So what did I get magnetic force का formula? QVB sin theta. आ रहा है समझ में? अब sin theta है. sin theta कौन सा प्रोडक्ट होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है. किसके किसके बीच में होगा? वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो F मैग्नेटिक इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू Q V क्रॉस B. आया समझ में? आया क्या? मैं शेयर कर दूंगा ये फाइल, टेंशन मत करो. डिड यू अंडरस्टैंड? कहाँ पे गए हो? तो नाउ कैन यू रिलेट दिस फॉर्मूला? F is equal to QVB sin theta. Yes. Now, this is not called Lorentz force, by the way. This is called magnetic force. Lorentz force इसको बोलते हैं अगले वाले को. Now, यहाँ तक आपको आया समझ में? We know when a charge is moving in electric field, it will cause some effect. If it is moving in magnetic field, it will cause some effect. अब समझो electric field है. Electric field is what produced by a positive charge. Negative charge भी करता है, positive charge भी करता है. So what is the difference? What is the difference between electric charge, electric field started by a negative charge and electric field started by a positive charge? Can you tell me a difference? From positive it will be away, and from negative it will be towards. So imagine, let us imagine there is a
electric field which is developed by positive charge. That means everything is going away from that charge. And now, for example, Bhuvan does some screwing around. He starts sending positive charges in that electric field. Electric field is generated by positive charge. The incoming charge is also positive. What will happen? They will repel each other. Why? Because this field which is created by the positive charge will try to push that away. Force of repulsion. This is the electric force. And we know what is electric force? Q into E, charge into electric field. Now, if the same charge is moving in magnetic field, we right now saw how it will be affected, QVB. Now, scientist is telling us, if it is moving in both electric and magnetic field, it will face both the forces. Electric force also and magnetic force also. And that combination of forces is known as Lorentz force. It is combination of electric force and magnetic force on the charge moving in electric and magnetic force, the field. देखो यहाँ पे लिखा है electromagnetic and gravitational force act on neutral and large body. If moving charge is moving perpendicular to magnetic field, then its kinetic energy remains constant. Why? Work done is zero. Then force acting on presence of electric and magnetic field. देखा simultaneously. Both of them are acting. Electric field is also acting on that body. Magnetic field is also acting. So what will be the net force? Force electric plus force magnetic. इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है भाई? QE प्लस QVB साइन थीटा बराबर. सो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? F बार इज इक्वल टू QE प्लस QV क्रॉस B. ऐसा होगा. कॉमन ले लिया Q को. देखो समझ रहा है क्या किया उन्होंने? समझ रहा है? देखो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? QE है. वेक्टर फॉर्म में मैंने बस एक वेक्टर लगा दिया ऊपर, और QVB साइन थीटा को मैं QV क्रॉस B लिख सकता हूं. अब दोनों में क्या कॉमन है? Q कॉमन है, तो E प्लस V क्रॉस B हो गया. देखो लास्ट आ रहा है समझ में? वेरी नाइस. Last is what? Rules for finding the direction of force. How to find direction of force? Use the second rule. First rule is stupid. Fleming's left hand rule. If we spread our forefinger, middle finger and thumb, then our forefinger is direction of magnetic field. Middle finger is direction of current and thumb will represent direction of force. Now let us imagine. Magnetic field is inside, current is here. So forefinger, current is here, magnetic field is inside. Where is force? Upwards. Now if current is outwards, if magnetic field is here, current is on the left hand side, again it is upwards. So you can find the force, the direction of force. Actually वो ऐसा उल्टा होगा. मेरा हाथ उतना उल्टा योगा वोगा नहीं करता मैं, उतना उल्टा नहीं हो सकता. हाँ, फादर मदर चाइल्ड, बिल्कुल. Father is force, mother is magnetic field and child is current. फादर का फिंगर कौन सा है? फादर का फिंगर थंब है. Father is forefinger, mother is middle finger and child is thumb. ऐसा दिया. The motion of a charged particle in magnetic field. मैं बिल्कुल आसान है. अभी मैं आपको I will tell you one thing. If Bhuvan is moving in a straight line, running so fast, but imagine Vaishnav comes from this end and pushes him. Bhuvan is traveling in this direction. See, Bhuvan is moving like this and Vaishnav pushed him like this. Will Bhuvan directly change and become horizontal? His direction, will it change? It will curve like this. Yes. Now Bhuvan will move in a slanting direction because he got pushed in that direction.
एकदम से वो हॉरिजॉन्टल नहीं होता है. अब इमेजिन वैभव है ना, वेदांत pushed him once again when he is in the curve motion. Now this was point A where Vaishnav pushed him. Now at point B, Vedant has pushed him. Here Vedant has pushed him. What will happen to his motion? Again more curve. Bhuvan will move like this. He will reach to C point. At C, what is your name? Samir has pushed him. So Bhuvan will move again in a curved direction. At point D, what is your name? Artash. Artash will push him. And again he will move in a curved direction. At point E, what is your name? I forgot your name. Zainab. Zainab pushed him. So Bhuvan made a complete circle. Same thing happens to a charge. If charge is moving in a field which is perpendicular field means what? Either inside, either outside. So you are creating a uniform magnetic field, pushing a charge into it. Zabarasti push कर रहे हो, and it is trying to make an angle theta. देखो जब भी चार्ज सीधा मूव करने की कोशिश करता है तो सीधा अगर रहेगा तो it will not disturb the field, it will go without any force. But if it makes an angle theta, let us see. This is the magnetic field. Cross means inside by the magnetic field. So charge ऐसा आया समझो Q. So it has made an angle theta here. So that is why it experiences a curly force, pushing force. That curly forces causes it to move in a circle. आ रहा है समझ में? Circle बोला तो कौन सा force आता है? Centripetal force. Towards the center pull होगा वो. Centripetal force. So in this condition, when a body is moving in a uniform magnetic field at an angle theta, which is perpendicular to the magnetic field, the centripetal force acting on the body is equal to the magnetic force, UVB. VV gets cancelled. What will be R? R will be equal to MV upon UB. What is R? Radius of that circular path. Yes. From there you can calculate the radius of the circular path. वही वो बताना चाहते हैं. समझ में आया क्या? Motion of a charged particle in a magnetic field. देखो पहला फॉर्मूला क्या दिया है? Radius is MV upon QB. अब MV is what? Momentum. Momentum is under root 2 mk. तो वही किया उन्होंने, अंडर रूट 2 mk काइनेटिक एनर्जी E के अपॉन QB. एंड टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई m अपॉन QB. कैसे किया देखो इसको. नाउ टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई r अपॉन v होता है ना. 2 पाई r अपॉन v होता है. अब r का फॉर्मूला क्या है? mv अपॉन QB इंटू v आएगा ना. v कैंसल. 2 पाई m अपॉन QB आया क्या? एंड फ्रीक्वेंसी इज ऑपोजिट ऑफ टाइम पीरियड. QB अपॉन 2 पाई m. समझ रहा है? वेरी नाइस. Symbols have their usual meanings. If the charged particle is moving in the direction of magnetic field, it experiences no force. The velocity of proton moving in magnetic field changes continuously. Change hota rehta. Velocity. Magnitude doesn't change. Direction changes. Remember, velocity is vector quantity. Why? Because it has direction. Magnitude nahi change hota hai. Kya change hota hai? Direction changes. Please keep that in mind. Now force acting, carrying in a conductor placed in a magnetic field. Another formula is BIL sin theta और IL cross B. ये चार्ज कैरिंग कंडक्टर में है, करंट कैरिंग कंडक्टर का फ्लो. QVB भी यूज कर सकते हो अगर Q दिया होगा तो BIL यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट डेटा इज गिवन इन योर क्वेश्चन. एप्लीकेशंस क्या है करंट कैरिंग कंडक्टर के? मैग्नेटिक फोर्स क्या है? BIDL sin theta does not depend on R. It does not depend on distance. Second, force is always perpendicular to B and IDL. ये Fleming's left hand rule तो वही बताता है. Force is always perpendicular to other two vectors. Tomorrow we will do with magnets because now bio का time हो चुका है. So did you understand up to now? My only request is only spend 20 to 30 minutes and try to do this. Hello?
हाँ, मैं एकेडमी में लेक्चर ले रहा था स्नान के। हाँ हाँ हाँ। हम्म। देखता। तो फिर भी मेरे को एक बजट बोल के रखो ना। ठीक है, देखता। देखता। हम्म, देखता मैं। चलेगा। चलेगा च... मैं इधर लेक्चर ले रहा हूँ, अभी लेक्चर चालू है। ठीक ठीक है। हाँ। तो कल आपका क्या हुआ, बायो में कुछ हुआ? कल लेक्चर ही तो हुआ तो किसी अरे लेक्चर ही नहीं हुआ, चलो ठीक है, अच्छी बात है, मैं लेक्चर लूँ। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज स्टार्ट करने से पहले प्लीज टेल मी व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? यस, भुवन। a period in which पीरियड। a body is बॉडी इज व्हाट? आउट ऑफ कंट्रोल। very accident. See, in earlier times, that means around 50 years ago, health was considered to be only physical well-being. यानी कि आप फिजिकली फिट है तो आप हेल्दी है। That was what considered around 50 years ago. But right now, since there are many other things which have come into life, unnecessary things, that is why health's modern definition has been given as the physical, mental, and social well-being of a person. What? Physical, mental, and social well-beings. What does physical mean? You all know, physically fit. Mental means you're mentally sound, no mental problems or no stress, mental stress. And social well-being, socially connected. That is what makes a healthy person, who's physically fit, who's mentally stable, and who is socially sound. You might have heard. Have you done the parliament chapter here in polity? One of the main, what do we say, points required to be elected as a member of parliament is the person should not be mentally unsound. ऐसा कुछ तो है. He should be sound, या फिर mentally unsound नहीं होना चाहिए, मतलब mentally बेकार नहीं होना चाहिए, ऐसा है. तो वो इससे related है. Now health is what again? Health is a state of complete physical, mental, and social well-being. It is the functional or metabolic efficiency of a living being. Some basic factors include such as balanced diet, personal hygiene, and regular exercise. Contributes to नोट्स शेयर करा good health. किसका? प्लीज का नोट्स फिजिक्स का करता, हाँ. दिमाग है ना तेरे को. Same.
So, what are some factors which are responsible for a healthy being? Balanced diet, personal hygiene, and regular exercise. Apart from these, awareness about diseases and immunization also affects health. कोविड का अवेयरनेस था इसीलिए लॉकडाउन था. अवेयरनेस नहीं होता तो बहुत सारी चीजें हो गई होती. Now, what is a disease? It's a condition of disturbed or damaged functioning of body due to infection, defective diet, heredity, and environment. Heredity means which is passed from one generation to another. The causes of disease in humans can be pathogens, disease-causing organisms, or genetical also. Now, there are different types of diseases. One is communicable disease. What is communicable disease? हो सकते हैं It can be spread from one person to another. कम टाइम के लिए रहते हैं बॉडी में So, communicable disease, non-communicable disease, and genetic disorders. So, communicable diseases are because of four factors. One is bacterial diseases, second is viral diseases, third is protozoan diseases, and fourth is fungal disease. Non-communicable are what? They are serious diseases like cancer, diabetes, heart, all those problems. HIV viral है. वायरल कैसा है वो डेंजरस है मर जाते अरे viral disease है ना लेकिन हाँ स्प्रेड हो गया वायरल नॉन कम्युनिकेबल है. तो HIV वाले का टॉवेल को हाथ लगा तुझे कुछ नहीं होगा. नहीं, आई एम नॉट जोकिंग. अगर if you're using the same syringe or the same instrument or the same needle or knife, then तब होता है. ये सब नहीं Then genetic disorders are ones which are passed from one generation to another. For example, hemophilia. You know hemophilia's other name? होती है ना हाँ ठीक है. होती है ना It is known as royal bleeders disease. The British crown family. The generations of the British crown family have this disease, hemophilia. इसमें क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपकी नस काट दी फॉर एग्जाम्पल, तो आपके हाथों में से नस में से खून आएगा. थोड़ी देर बाद वो खून बंद हो जाएगा क्योंकि क्लॉटिंग होता है. हीमोफिलिक लोगों में होता ही नहीं क्लॉटिंग. जब तक खून खत्म नहीं होगा तब तक होता है वो. दे आर अनेबल टू फॉर्म क्लॉट्स इन द बॉडी. सो ये रॉयल क्राउन, जो ब्रिटिश रॉयल क्राउन है, वो फैमिली को ये है. ये एक्चुअली दिस डिजीज like in around medieval or maybe before Renaissance, Russian people had Tsar. You might be knowing Tsar, the head of Russians. Czar, Tsar, the old Russian empire. Disease नहीं है Tsar, वो emperor का नाम होता है Tsar. जैसे इनका ब्रिटिश किंग होता है, तो वैसे वहां पे पॉलिटिकल रिलेशंस बढ़ाने के लिए वो लोग मैरिजेस कराते. तो जार के बेटे के साथ ये ब्रिटिश क्राउन ने अपने बेटी का शादी कराए थे वो टाइम पे. एंड शी वाज हेमोफिलिक. सो वहां पे जार का खानदान तो खत्म ही हो गया पूरा, बट यहाँ पर भी जनरेशन जो है वो उस डिजीज को कैरी करते गए. तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रॉयल ब्लीडर्स डिजीज. वहां पे मतलब 25 के ऊपर कोई जिया ही नहीं. 25 years. I'm just telling. Now, communicable diseases. There are various kinds of communicable diseases which affect the health of human beings. These diseases are infectious. That means they spread from affected individual to normal individual. These are caused by pathogens such as bacteria, virus, protozoa, and fungi. These pathogens can spread by air, water, vectors, or by sexual contact. Now, some bacterial diseases, पहला TB है, tuberculosis. Always remember, you should know the causative organism. मतलब कौन सा organism से होता है. Organism का नाम है Mycobacterium tuberculosis. What is the name? Mycobacterium tuberculosis. It spread through coughing, sneezing, and splitting droplets. Symptoms of disease are fever, cough, sputum with blood. What is sputum? The sticky things which comes out when you cough, that is known as sputum. So if that sputum has blood with it, that is also one of the symptoms. Chest pain, loss of appetite, weight loss. देखो टीबी हुआ.
हर चीज इसके साथ होती है. Next, it can be prevented by immunization that includes this vaccine, BCG, Bacillus calmette-guerin. Calmette and Guerin are scientists which developed this vaccine. Bacillus calmette-guerin. Isolation of patient is important because it can spread. And second is sanitation, cleanliness. Antibiotics such as rifampicin and ioniazid, etc. No need to know this. Only that vaccine is important. BCG, causative organism, Mycobacterium tuberculosis, and some symptoms. Second is diphtheria, known as caused by Corynebacterium diphtheria. Infection through droplets, जो पानी निकलता है ना छींक के बाद, वो वाला. It is characterized by slight fever, oozing of semi-solid material in throat. निकलता है Immunization is done by DPT vaccine. Diphtheria, pertussis, tetanus. Full form DPT. अगला देखो pertussis आ गया. Whooping cough. It is caused by Bacillus pertussis or Bordetella pertussis. Bacillus pertussis अच्छा है. Infections occur through direct contact and droplet. Droplet infection क्या होता है पता है क्या? मैं इस पे जबरदस्ती छींकूं, वो जो छींक के ड्रॉपलेट्स उड़ गए उससे वो इन्फेक्ट हो गई. तो ऐसा ये वो जैसे जैसे अभी वी आर लाइव. I will tell you after the lecture is over. There was a very interesting case during lockdown. Then how it is characterized? It is characterized by inflammation of respiratory passage. आपको fiery feel होगा, fiery lungs में. Cold cough and mild fever in the beginning, leading to accumulation of mucus and inspiratory whoop. Mucus यानी कि चिपचिपापन आपके लंग्स में जमा हो. Vaccination is done by DPT vaccine. देखो यहाँ पे भी DPT vaccine आया. Diphtheria, pertussis and tetanus. Use of antibiotic drugs like erythromycin, chloramphenicol and ampicillin. जरूरत नहीं. अगला है tetanus, lockjaw, धनुस्तंभ. ये आपको याद है, आपको जब भी चोट लगती है तो टीटी का इंजेक्शन देते हैं, तो वो नहीं दिया तो आपको ये होता है टेटनस. हाँ वही ना, लोहे का ही चीज का. हाँ ज्यादा कुछ नहीं होता. अरे वो अभी देख कैसा है, कुछ लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव. Now it is caused by Clostridium tetani. It is caused by Clostridium tetani. Infection occurs through spores of bacteria entering the body via wounds, accidents, and unsterilized surgical instruments. As this bacterium secretes spasmin toxin. ये खुले जगहों से ही अंदर जाता है because it cannot penetrate through skin. Then it is characterized by muscular rigidity, lockjaw, and painful muscular spasm. मसल्स का देखो, आपने कभी देखा होगा कि आपको कभी कभी मसल टाइट हो जाती है, बहुत जबरदस्त पेन होता है, क्रैम्प. अगर सोचो मैं आपको हमेशा के लिए क्रैम्प दे दूं मर जाता हूँ उससे. तो वही होता है इसमें. भुवन. Injection of ATS, anti-tetanus serum, within 24 hours of injury leads to protection of this disease. TT का इंजेक्शन बोलते हैं इसको, tetanus toxoid. अगला cholera, इसका favorite. It is caused by Vibrio cholerae, spreads through contaminated food and water or by direct contact. It is characterized by effortless watery stool, rapid dehydration, muscular cramp. वीक हो जाता है बेचारा बार बार जाके. It is treated by use of ORS and sanitation. साफ सुथरा, नुक्कड़ का पानी पूरी नहीं खाने. Next, ORS contains, if 1 liter of ORS contains 1.5 grams of glucose, 3.5 grams of NaCl, which is electrolytes, KCl, NaCl, and trisodium citrate. अगला again diarrhea, Salmonella typhimurium या Shigella shige. It spreads through contaminated meat and other proteinaceous food articles. इसलिए उसको बॉईल करना जरूरी है. And transmitted through fingers, beds, clothes, and utensils, and most importantly by feces.
मक्खियां लगते ना, vomiting, nausea, headache, thyroid fever and frequent passage of stool with mucus, blood and abdominal cramps. यानी कि आपके स्टूल में भी ब्लड निकले, म्यूकस निकले. ओरल एंड इंट्रावेनस रिहाइड्रेशन इज रिक्वायर्ड. सलाइन पे इतना वीक हो जाता है कि सलाइन चढ़ानी पड़ती है. कोलेरा का नेक्स्ट लेवल डायरिया है. कोलेरा लेवल 1 है, डायरिया लेवल 2 है. कोलेरा में आप ओआरएस से ठीक हो सकते हो, बट डायरिया में आपको डायरेक्टली इंजेक्ट करना पड़ता है, आईवी. नेक्स्ट, न्यूमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनिया, ट्रांसमिट्स थ्रू ड्रॉपलेट. फिर से ड्रॉपलेट्स. सिम्टम्स आर सडन चिल, चेस्ट पेन, कफ विथ रस्टी म्यूकॉइड स्पूटम. रस्टी म्यूकॉइड मतलब रेडिश स्पूटम एंड राइज इन टेम्परेचर. यहाँ पे क्या होता है, आपका एल्वियोलाई जो होता है ना, उसमें पानी भर जाता है, वाटर. It is treated by use of drugs like erythromycin, tetracycline, and penicillin. The next is syphilis, caused by Treponema pallidum. It's a sexually transmitted disease. Syphilis transmits through sexual contact and from mother to children. Mother infected होगी तो children में भी आता. Next, common symptoms are painless ulcer on the genitals and swelling of local lymph glands, rashes, hair loss, swollen joints, and flu-like illness. Private parts पे swelling होगा, सूजन आएगी, and अल्सर आएगा, यानी कि पिंपल लाइक थिंग. देन डिजीज इज क्यूरेबल थ्रू appropriate antibiotics, penicillin and tetracycline का heavy antibiotic course होता है. Next is gonorrhea, again sexually transmitted disease. Neisseria gonorrhoeae or Diplococcus gonorrhoeae spreads through sexual contact, common in toilets and underclothes. यानी कि टॉयलेट वाला जो वेस्टर्न वाला सिस्टम है, वो अगर क्लीन नहीं होगा तो ये हो सकता है. इंडियन इज हाँ भाई. Then bacterium lives in genital tubes. Genital tubes आपको पता है कौन से, यूरेथ्रा है, उसमें ये रहता है, यूरेथ्रा में. Produces pus containing discharge. पस लाइक डिस्चार्ज निकलता है अंदर से. पेन अराउंड जेनिटेलिया एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन. आपको तकलीफ होगी ड्यूरिंग यूरिनेशन, बर्न लाइक सेंसेशन एंड ऑल्सो पेन अराउंड द जेनिटेलिया. Then use of antibiotics, penicillin, ampicillin, maintaining high moral characters. यानी कि जो भी करना है इंसानियत में करो. Next, it is a venereal disease or sexually transmitted disease, जो मैं बोल रहा हूँ. Then plague, bubonic plague, also known as black death. ये plague से related एक historic question मैंने शायद last time बताया था. का फेवरेट डिजीज है. पुणे का favorite disease है plague, because if you remember सूरत split हुआ था कांग्रेस में. नेशनलिस्ट एंड रेडिकल जो थे वो अपोजिट हो गए थे. तो जब लोकमान्य तिलक काला पानी में थे, आई गेस, तो एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक डिसाइडेड टू रीयूनाइट द कांग्रेस अगेन, एंड दैट वाज गोइंग टू टेक प्लेस इन पूना. उसका नाम भी पड़ गया था पूना पैक्ट. बट क्या हो गया, बुबोनिक प्लेग चल रहा था पुणे में, बहुत जबरदस्त डेथ्स हो रही थी. बुबोनिक सर के बोल. बुबोनिक लार्ज स्केल, तो डेथ हो रही थी बहुत सारी. इसीलिए फिर उसको पुणे से शिफ्ट किया गया लखनऊ में. लखनऊ पैक्ट नाम दिया उसको. पहले वो पूना पैक्ट था, इट वाज देन ब्रॉट टू लखनऊ. तो ये प्लेग का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है. पुणे में ही होने वाला था सब मिलना कांग्रेस का एंड आगे लड़ना, बट वो हुआ लखनऊ में. लखनऊ पैक्ट आई थिंक टुक प्लेस इन 1917, 16 और 17, आई डोंट रिमेम्बर. तो ये प्लेग से रिलेटेड है. इट इज कॉज्ड बाय यर्सीनिया पेस्टिस. इट स्प्रेड्स थ्रू रैट फ्ली टू मैन. रैट फ्ली पता है आपको क्या होता है? रैट फ्ली जब रैट काटता है ना, तो उसके दांतों में एक पैथोजन होता है. पैथोजन का नाम है यर्सीनिया पेस्टिस. ये हमारे बॉडी में चला. It spreads through rat flea to man. Symptoms are armpit and groin swelling up into painful buboes. ऐसे बड़े बड़े पिंपल लाइक बुबोस बनते हैं. Then high fever, chill, exhaustion and hemorrhages which turns black. Hemorrhage तो आपको पता है, blood loss everywhere, internal bleeding, and bleeding होने के बाद black color से निकलता है वो blood बाहर.
That is why इसको black death भी बोलते. Treatment with anti-plague vaccine, spraying of pesticides for killing of rats, and Wesen test, stain test is performed for diagnosis. इतना important नहीं है. अगला टाइफॉइड है, caused by salmonella typhi, spreads through food, milk and water contaminated with intestinal discharge, either directly or through houseflies. मक्खियां इसलिए ज्यादा बैठने नहीं देने का कारण. High fever in steps. पहला lesions and ulceration होगा in the intestinal walls are common. What are lesions and ulcerations? Ulceration तो हमें पता है, pimple like बनेगा outgrowth. What are lesions? Lesions. हाँ, high temperature. लेकिन intestine के temperature का क्या है? अंदर वो ये हो जाता है, कट पड़ता है. Lesions मतलब मैं आपको बताता हूँ. Lesions का meaning होता है बोलते हैं ना, unusual movement. अब आपको ना फील होगा कि आपका इंटेस्टाइन बहुत जबरदस्त मूव कर. कभी कभी देखो आपको फील होता है खाना जब मूव होता रहता है इंटेस्टाइन में, आवाज भी आता है, देखो गुड़ 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 आवाज आता भूख लगी तो आपको है. अरे नहीं रे, पेट में जब जाता है ना खाना तभी भी आवाज आता भूख लगती है तभी भी है. तू भुक्कड़ आदमी. आप तो वैसे ही अभी तो आप खा भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं, आप बीमार हो, तब वो अगर इंटेस्टाइन अनयूजुअल ये करे तो उसको लीजन्स. Use of antibiotics, prolonged treatment required for this disease. Vidal test is important for typhoid. Last is leprosy, Hansen's disease. It is caused by mycobacterium leprosy. ये leprosy भी एक historical disease है humans, Indians के लिए. चुप रहे. That is sexual diseases. Leprosy को अछूत बीमारी बोलते हैं. देखो पहले देखो अछूत वाला सिस्टम था, हरिजन सिस्टम. वो टाइम पे लेप्रेसी वाले मतलब कैसे बेसिकली कैसे था कि द पीपल वर पुअर और लिविंग इन पुअर एरियाज लाइक वेयर देयर वाज नो रिसोर्सेस अवेलेबल. तो वो लोगों को ये लेप्रेसी बहुत जल्दी कैच करता था, स्किन पे होता है, और उसके वजह से उनका वो जो है ना अपीयरेंस और गरीब हो जाता है. यानी कि दे लुक यानी कि व्हाट टू से देयर अपीयरेंस इवन गो लोअर्स डाउन. So it damages the nerves, skin, lymph nodes, eyes, nose, mouth, larynx, muscles. यानी कि श्रिंक होने लगती है उनकी बहुत बहुत जबरदस्त श्रिंक होती है. तो उसके वजह से क्या होता है, पुराने जमाने में ऐसे लोगों को बोलते थे कि इन पे श्राप लग गया. हाँ, लोग कुछ भी यार, इंडियंस बहुत नेक्स्ट लेवल थिंकिंग वाले थे वो टाइम पे. तो गांव में अगर किसी को ऐसा बीमारी हो गया, उसका नाम था यार मैं भूल गया, कुष्ठ रोग बोलते हैं. कुष्ठ रोग. हाँ, कुष्ठ रोग. कुष्ठ रोग. सर और अन्य वो डॉक्टर कुछ तो थे ना सर, डॉक्टर बाबा आमटे, आमटे प्रकाश आमटे उनका बेटा है. हाँ. सो कुष्ठ रोग. So whenever a person used to get affected by this disease, he was removed from the village. तड़ी पार किया जाता था कि आप हमारे, हम लोगों को आपका श्राप हम पे लग जाएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, हम मर जाएंगे, तो आप जाओ यहाँ से. इतने प्यार से नहीं बोलते थे, डायरेक्ट निकालते थे. तो दिस वाज कॉजिंग अ गैप इन द, व्हाट डू वी कॉल इट, इन द सोशल एनवायरनमेंट. समाज में एक गैप क्रिएट कर, और करने वाले ऑलमोस्ट ऑलवेज रिच पीपल होते हैं, याद रख. तो डॉक्टर प्रकाश आमटे, who was a famous advocate during that time, he studied his LLB and all, bar and all, from international universities. He went out for his education. When he returned back, he was a man full of ego. He was full of ego. यानी कि I am the smartest person. All of them are under my shoes. But once, like afterwards, he started observing what is happening with the people in his village. And that changed his life completely. He and his wife, they started working for these people. Just like Mr. Jyotiba and Mrs. Savitribai Phule did for women empowerment, Mr. Baba Amte and his wife started working on these people for their benefit, for their better health, for their medical facilities and all that.
and which was taken over afterwards by his own son, Prakash Amte. And because of their efforts, the medicines for leprosy and all was bought first time in India, was brought in India or was studied in India, because they went into the roots of that disease, because it was separating the social castes from one and another. Then later on, once this problem was over, Mr. and Mrs. Prakash Amte started working on animal welfare. They still live in the jungle with their family. इतना नहीं पता मेरे. But now they are working on animal welfare. Means they are so connected to nature. Once upon a time, they were also like, his father was also like too much attitude. But when he came down, he realized that people need someone to lead them, to help them. So this is also one of the dangerous diseases, leprosy, caused a barrier in the social communication. So Mycobacterium leprae, it does not spread by initial contact, but prolonged closer contact through skin lesions. Continuously, if you're in contact, then it can cause. Nasal and throat discharges also spread this disease. Sanitation and use of suitable drugs like dapsone, rifampicin, ofloxacin, and mugra oil, along with surgery, may protect from the disease. Bacterium may enter into the lymph, into the body, and damage the nerves, skin, lymph node, eye, nose, mouth, larynx, muscles, spleen. बोलते ना in the end death होता है, but बहुत painful death, because people don't accept you and you die of the disease. दो चीजें, मतलब mental torture lifelong, and then physical torture leading to death. And appearance of skin patches, numbness in some body parts, fever, finally ulcer, nodules, lesions, scaly scabs, deformities in the finger, toes, and wasting of body parts are symptoms. अरे मतलब नम गिरने की वजह से उसका यूज ही नहीं होता वो बॉडी पार्ट का, तो वेस्ट हो जाता, ऐसे बोल रहे. ये कुछ और रहता है. क्या सोच, क्या सोच. Botulism caused by Clostridium botulinum. Symptoms are double vision, ऐसे दो लोग दिखते अचानक. Drooping eyelids, blurred vision, drooping eyelids, slurred speech. Slurred speech मतलब क्या, सही से बोल नहीं पाता वो, कंगना. Difficulty in swallowing, dry mouth, and muscle weakness. It spreads through contaminated food and water or foodstuffs product. मतलब देखो फूड से आपको ये भी हो सकता. To remove the source of toxin producing bacteria, the administration of proper antibiotics is used. Viral disease we will do tomorrow. So now our session is over for today. Let us meet tomorrow at 7:40. At 10 o'clock, you will have your lecture, maths lecture. Thank you so much.